Hi, my name is Amay Sathe. I work with Tata Mutual Fund and I manage three funds. A brief background about myself. I have done my MBA and CFA and I have total 18 years of experience, out of which 9 years are with Tata Mutual Fund. Currently, I'm managing three funds, Tata FlexiCap Fund, Tata Banking and Finance Services Fund and Tata Young Citizen Funds. सो टुडे विल बी डिस्कसिंग टाटा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड. तो ये फंड के बारे में थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ. एज नेम सेज, दिस फंड एक्चुअली इन्वेस्ट इन कंपनीज विच आर इन बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विसेज इंडस्ट्री. इनफैक्ट इसमें काफ़ी बड़ा यूनिवर्स है. अगर मैं सिर्फ बैंकिंग की बात करूंगा तो बैंकिंग में भी आपके पास प्राइवेट बैंक है, पीएसयू बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, सिमिलरली एनबीएफसी से, एचएफसी से. तो ये लेंडिंग पार्ट होता है. And there is also non-lending part of this of the in BFSI universe, जहाँ पे life insurance companies, general insurance companies, asset management companies. Then there is also companies which are working with the exchanges, brokers. So it's a fairly wide mandate. And if you see BFSI weightage in various benchmark, it starts from probably say 25 to 35% over a different types of benchmark. So clearly a very important segment of the economy and very important segment of the financial market and exchange and investment universe. Something about the funds philosophy. जैसे आपने देखा कि नाम में बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज सब इंक्लूडेड है, तो एंड इट इज़ लिंक टू द इकोनॉमी. सो क्लियरली वेन एवर इकोनॉमी डज वेल, नॉर्मली BFSI एज अ सेक्टर डज वेल एंड वाइस वर्सा. ओवर लास्ट 10 years हम लोगों ने ये देखा है कि इकोनॉमी गोज थ्रू अ साइकिल ऑफ गुड पीरियड, साइकिल ऑफ बैड पीरियड. The way we have managed this fund, that we have been extremely proactive in looking at our investments. So whenever economy was going through a very difficult phase, especially during 2018 till 2021 summer, I think we were very extremely conservative. काफ़ी सारे डिफेंसिव नेम्स हमारे फंड में थे, जहाँ पे हम लोग को एसेट क्वालिटी पे कुछ इशू नहीं था. तो विच एवर एंटिटीज वेयर डूइंग रीजनेबली ओके ऑन एसेट क्वालिटी, वी हैड अ वेरी हाई एक्सपोजर टू देम. As we as we came out of COVID challenges, COVID stress, what we saw that asset quality challenges started to come down. तो उसके बाद हम लोगों ने पोर्टफोलियो को भी अकॉर्डिंगली ट्यून किया. काफ़ी सारे PSU बैंक्स आ गए पोर्टफोलियो में, काफ़ी सारे मिड साइज, स्मॉल साइज बैंक्स, HFCs, NBFCs also aware in the fund. Similarly, what we also did was that we went underweight on some of the large or mega caps that we had in our sector. So over a period of time, this is how we have managed the fund. आज की मैं अगर बात करूँ, I think at this point sector is at a very interesting juncture. रीज़न ये है कि ये सेक्टर ने लास्ट 5 साल में काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है बिकॉज ऑफ मेनी रीजन्स. प्रोबेबली अदर सेक्टर स्टार्टेड डू वेल और स्टार्टेड लुक अट्रैक्टिव ऑन वैल्यूएशन, बट दिस सेक्टर इज कमिंग ऑन द बैक ऑफ फेयरली लार्ज अंडर परफॉर्मेंस, विच मीन्स वैल्यूएशन काफ़ी रिजनेबल है. इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द एंटिटीज that we have in our funds are actually trading at anywhere between say 15 to 25% kind of a discount to their long-term averages. So valuation is in investors' favor. Since it's a sector fund, valuation अच्छा होना entry point के लिए बहुत ज़रूरी होता है, and इसीलिए हम लोग को लग रहा है कि whenever valuation is in your favor, I think you should look at some of the sector funds and BFSI fits the bill perfectly there. So valuation आपके फेवर में है. Similarly, earnings growth also is fairly healthy. इनफैक्ट अगर मैं हमारे फंड की ही बात करूंगा, ओवर नेक्स्ट से 2 to 3 years कंसेंसस अर्निंग्स एस्टिमेट इज एनीवेयर बिटवीन से 12 to 16% फॉर मेनी ऑफ द स्टॉक्स दैट वी ओन इन अवर फंड. सो क्लियरली double digit earning growth in this environment is a very good outcome. Along with you have a fairly attractive valuation. So that is a broad framework for this fund. In terms of our positioning, we are currently holding a large exposure to those entities where we see that margin pressures have sort of come to an end. So there could be some spillover in say second quarter, but more or less margin pressure is done. Not only that, we are also positioning our fund जहाँ पे whenever interest rate cut happens, many of the entities that we hold in our fund are likely to benefit. And accordingly we have positioned our fund. In fact, अगर आप देखोगे काफ़ी सारे interest rate sensitive are there in our funds. Many NBFCs, HFCs और some of the banks जिनका काफ़ी बड़ा फिक्स रेट लोन बुक है, they are there in our funds. The reason we are doing this is that एक क्लियर व्यू एक तो इमर्ज हो रहा है कि इंटरेस्ट रेट साइकिल इज क्लोजर टू पिकिंग आउट, और एटलीस्ट इट हैज़ पिक्ड आउट, विच मीन्स यहाँ से रेट्स नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है.
टाइमिंग उसका बताना बहुत मुश्किल होता है. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट कि ये साइकिल, रिवर्स साइकिल कब चालू होगा. But clearly we are somewhere sort of peak of the interest rate cycle. So you need to have entities which will actually benefit whenever rate cycle reverses. Normally in that cycle two types of entities benefit, जिनका फिक्स रेट लोन बुक ज़्यादा है और जिनका फ्लोटिंग रेट लायबिलिटीज ज़्यादा है. And this is how we have positioned ourselves. In terms of large cap banks, we own anywhere between around 45 to 50% in terms of large cap banks. We have around 10 to 12% exposure to HFCs. मोस्ट ऑफ द HFCs हमारे अफोर्डेबल सेगमेंट में हैं जहाँ पे ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. नॉट ओनली दैट, गवर्नमेंट का फोकस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन अफोर्डेबल. एंड आपने सुना होगा कि PMJDY वेरियस टाइप्स ऑफ स्कीम्स गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग. Biggest beneficiary will be affordable housing, and we have almost 10 to 12% exposure. We also have exposure to some of the mid-sized banks or small-sized bank, जहाँ पे valuation is very very attractive. So that accounts for another 10 to 12%. Our fund is fairly well exposed to some of the insurance names. तो अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस प्लस जनरल इंश्योरेंस की बात करूँ तो टोटल एक्सपोजर इज अराउंड 8 to 10%. We have another 5% exposure to exchanges plus brokers kind of or asset management companies, and we have a little bit exposure to PSU bank. So PSU banks is a one underweight position, but otherwise more or less we are there wherever we see valuations are in our favor, and earnings growth is holding up quite well. So this is broadly on our fund. Just on the return part, over since inception, the fund would have returned around 16.5% CAGR for last 10 years, 8-9 years. And in most of the time horizon, we would have beaten the benchmark. So this is it from my side on Tata Banking and Financial Services Fund. Many thanks. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.